Hi, this is Mohammed Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss how to do transformer stability check in a substation or you may say differential stability check. हम लोग सबस्टेशन चार्ज करने का पहले ट्रांसफार्मर का स्टेबिलिटी चेक करता हूँ थ्रू डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। तो ये करने के लिए prior to do the test we have note some parameter of the transformer and primary and secondary CTs. So suppose this is a transformer. This is a 10 MVA transformer. Vector group is DYN11 and percentage of impedance is 8.5%. Primary full load current is 174.9. Secondary full load current is a 3 times 524.8 ampere. And this is 33 by 11 kV. We have to put all this data in the numerical relay. Suppose we are using RET615 heavy numerical relay. It's what as a differential protection relay. And this numerical relay, you have to put these inputs, the vector transfer capacity, transfer ratio, percent of impedance, primary full load current, secondary full load current, along with HT side CT ratio and LT side CT ratio, we will have to put in the numerical relay prior to do the test. So suppose this is 10 MVA transformer, this is delta side, this is task side. So there is three phase, three phase, and this is the numerical relay. Suppose CT is connected. Suppose this is 600 by 300, 1, 1, 1. And suppose in 11 kV side, CT is connected. So 600, 300, 551. And suppose this is 300, 150. 511. Suppose HT side CT ratio is 300, 150, 111. And 11 kV side CT ratio is 600 by 300, 551. So the CT ratio, the CT data and transfer data you have to put in the numerical relay. That is the test. So just we are completing the wiring. We have already discussed in my previous video how to do the differential protection relay circuit wiring. I am not repeating the same in this video. So this is the differential protection relay. We have connected HT side CT at 11 kV HT side CT and we have put the transformer data and CT data in the relay. Now what should we do to do the test? On 415 volt MCB in HT side and we will short the LT side. We will short the LT side. We will put one MCB in HT side and short the LT side. We may reverse the same. We can short the HT side and feed 415 वोल्ट टू LT साइड. तो इसमें क्या दिक्कत होता है? सपोज इसमें 415 वोल्ट दे रहा हूँ HT साइड में, तो LT साइड में जो वोल्टेज दिखाई देगा इसका 1/3. So that is safe. But if we feed 415 volt in LT side, then HT side it will come 415 into 3, although approx 400 volt. That is unsafe. This is little bit unsafe. That is why सेफ्टी पॉइंट को दिमाग में रख के हम लोग एचटी साइड में 415 वोल्ट फीड करता हूं एंड एलटी साइड को शॉर्ट करता हूं. सो वी आर फीडिंग 415 वोल्ट थ्रू एमसीबी इन एचटी साइड एंड वी हैव short the LT side. Now we'll measure the current in HT side through a tongue tester. तो इसमें करंट कितना होना चाहिए? We'll calculate first mathematically इसमें करंट कितना होना चाहिए.
So इसका current होना चाहिए. We know the percent of impedance is 8.5%. Percentage of impedance is 8.5%. We will use impedance resistance method to calculate the current. तो impedance resistance method में क्या होता है? Impedance resistance is equal to impedance ohm is equal to kV square by MVA into percentage of impedance. So 33 gives it. kV is 33 square by MVA is 10 into percent of 8.5%. 8%. It will come approx 9 ohm. If you go round figure, it will come across 9 ohm. So what will be the current in HT side? So current will be 415 volt by root 3 into 9. It will come approx 25 ampere. So 25 ampere current will flow in HT side. If we measure through a counter star, then primary side current will be 25 ampere. Similarly, if we measure in 11 kV side through a transistor, it will come 3 times 25 into 75 ampere. It will show 75 ampere. Primary current equal to 415 volt is feeding through primary HT side. 11 kV side is shorted. Now, if we measure the current in 33 kV side, it will show 25 ampere, and 11 kV side it will 75 ampere. Now, through CT 300 1 by 1 ratio जो है, suppose we have taken 300 by 1 ratio for 33 kV. So 30 kV current will come 25 by 300 ampere. Similarly, in secondary side, if we take a 600 by 1, then it will come 75 by 600 ampere. This current will input in the relay. Now relay क्या मेजर करता है? रिले मेजर करेगा पर यूनिट करंट. रिले डायरेक्टली जो मेजर कर रहा है इसको पर यूनिट करंट में डाइवर्ट करेगा. तो पर यूनिट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? पर यूनिट करंट होता है पर यूनिट करंट इन एचटी साइड. एचटी साइड पर यूनिट करंट क्या होगा? एचटी साइड में हमारा कितना एम्पियर फ्लो कर रहा था? 25 एम्पियर. सो 25 बाय और फुल लोड करंट प्राइमरी में कितना है? 174.9. 25 by 174.9 is equal to 0.154 ampere. Is equal to 0.1. Similarly, we will measure the per unit current in secondary side. Secondary side का per unit current क्या होगा? Secondary side में 75 ampere फ्लो कर रहा है. तो 75 by secondary का फुल लोड करंट कितना है? 524 by 8. 524.8. सेकेंडरी का पर यूनिट करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी में कितना पॉइंट फ्लो रहा है? 75 एम्पियर डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट ऑफ सेकेंडरी दैट इज 524.8. इट विल आल्सो कम द सेम 154 0.154 एम्पियर. देन प्राइमरी एचटी साइड का पर यूनिट करंट एंड एचटी साइड का पर यूनिट करंट इज सेम. दिस मीन the vector sum I difference. Now we will measure the relay will show the I difference. Relay will show the I difference. What is I difference? I difference is the vector sum of this and this. The vector sum of this is equal to suppose 0.154 minus 0.154 is equal to 0. So in relay I difference will show 0. In R phase, Y phase I difference will show 0 and B phase Y difference will show 0. And another parameter also show in the relay, that is I bias. I bias क्या होता है? Suppose this is I1 and this is I2. तो हमारा डिफरेंशियल करंट जो होता है दैट इज वेक्टर सम ऑफ I1 एंड I2, दैट इज दिस वन माइनस दिस वन इज इक्वल टू 0. एंड I बायस क्या होता है? I बायस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बाय 2 इज इक्वल टू 0.154 प्लस 0.154 बाय 2 इज इक्वल टू 0.154. So in relay I difference will show 0 and I bias will show
0.154. If this is showing, then the system is stable. That is the stability. The system is stable. Now we'll check if any fault occur in this zone, this city to this city. In this zone में कोई fault आ गया तो ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, that will have to check. तो इसमें हम लोग क्या करता हूँ, कोई भी एक फेज के साथ 8 का, कोई भी एक फेज के साथ 8 का फॉल्ट कराता हूँ. उसके बाद हम लोग देखता हूँ इधर डिफरेंशियल करंट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. डिफरेंशियल करंट शो हो रहा है तो दैट इज फॉल्ट होकर ट्रिप कर रहा है, दैट इज स्टेबल. अदरवाइज और एक इजी प्रोसेस है. सपोज कोई रनिंग कंडीशन में अर्थ फॉल्ट करना नहीं चाह रहा है तो व्हाट विल डू, सपोज दिस इज P1 P2 P1 P2 P1 P2, this is P2 P1 P2 P1 P2 P1. So here 1s1 1s2 connected. Similarly इधर भी 1s1 1s2 connected. We just change the polarity. हम लोग इसका पोलैरिटी चेंज कर दूंगा. कोई भी एक साइड का, एलटी साइड का पोलैरिटी चेंज कर दूंगा. हम लोग क्या करूंगा, ये तीनों को देके हम लोग स्टार पॉइंट फॉर्म कर दूंगा और इसको 1s1 1s2 एंड 1s3 में क्या ज्वाइन कर दूंगा. ये तीनों को देके स्टार पॉइंट फॉर्म करूंगा और पोलैरिटी चेक करके 1s1 1s2 1s3 को रिले में कनेक्ट कर दूंगा. जस्ट विल अपोज द पोलैरिटी. हम लोग सेकेंडरी में जो सिटी लगाए वो सब पोलैरिटी को चेंज कर दूंगा. आइदर विल मेक ए अर्थ फॉल्ट इन एनी फेज or will change the polarity of secondary side city. सेकेंडरी में रिले में टर्मिनल चेंज करके सब पोलैरिटी चेंज कर दूंगा. तो जब पोलैरिटी चेंज कर दूंगा तब हम लोग दो चीज देखूंगा. क्या क्या देखूंगा, आई बायस एंड डिफरेंशियल. आई डिफरेंस कितना है तो तब आई डिफरेंस कितना दिखाएगा, जब मैं पोलैरिटी चेंज कर दिया तब इसका आई डिफरेंस दिखाएगा 0.154 प्लस 0.154 इज इक्वल टू 80 3.308. तो आई डिफरेंस तब दिखाएगा जब मैं पोलैरिटी चेंज कर दिया तब इसका दिखाएगा आई डिफरेंस विल शो 0.308. If I difference is set by 0.2 then it will trip. But if you set the relay I difference you will set 0.5 or 0.4 then it will not trip. Ideally I difference should be 0 and I bias will be the I1 plus I2 by 2. So the summary is, first we check in normal condition 455 वोल्ट प्राइमरी में फीड करके सेकेंडरी को शॉर्ट करके आई डिफरेंस 0 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है. इफ आई डिफरेंस 0 दिखा रहा है then this stable. Now what we'll do we'll make a fault by earth fault by to short by any discharge rod or any other means. लाके हम लोग एक फर्स्ट ग्राउंड का शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज सेकेंडरी साइड का सिटी का पोलैरिटी चेंज कर दूंगा. तो सपोज सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है सेकेंडरी साइड का पोलैरिटी, सिटी का पोलैरिटी चेंज कर देना. तो जब पोलैरिटी चेंज कर दूंगा तब आई डिफरेंस दिखाएगा I1 प्लस I2 मतलब 0.308. इसमें रिले में सेटिंग रहता है जो आई डिफरेंस कितना में सेटिंग करना है, 0.1 0.2 0.3 0.4. तो बेसिकली 0.2 में सेट होता है. आइडियली इट शुड बी 0 सेट रहता है 0.2 में. अभी 0.3 आ रहा है तो इट विल ट्रिप. 0.2 से ज्यादा आएगा तो इट विल ट्रिप. सो this is the stability check of a transformer in normal condition, and after create a fault also we have to check whether it is tripping or not tripping. If it will trip in abnormal condition and in normal condition it is stable, then that is okay. In this way we have done the stability check of a transformer in any substation.